Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the third lecture of this series of Indian Evidence Act and I am Advocate Gaurav Singh Adana. Now let's start with the first topic, that is facts. Now let's see what is the classifications of facts. Fact is of two types, physical fact and the mental fact. अब facts को classify करने के दो तरीके हैं. This is the first method. And the other kind of classification is other kind of criteria by which the classification of facts is done is fact in issue and the relevant fact. फैक्ट्स को आप दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो. पहला तो है फिजिकल फैक्ट एंड द मेंटल फैक्ट, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है इट इज फैक्ट इन इशू एंड रिलीवेंट फैक्ट. अब ये वाला पार्ट थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ व्हाट इज फिजिकल फैक्ट? फिजिकल फैक्ट्स आर दोज फैक्ट्स विच कुड बी सीन एंड हियर. So whatever things you can see or you can hear are the physical facts. So whatever you are seeing that it is written, it is physical fact. What you are seeing, the body language of a person, it is physical fact. You hear the sound of anything, that is physical fact. And it is not limited to only see and hear. Whatever you feel, if you smell something, a smell of some kind, then it is also physical fact. Means whatever you can perceive from your senses. So anything which is perceived from your senses, five senses, then it could be a physical fact. But something which is there in your mind or some person's mind which is not visible to anyone and no one can perceive that from your mind, because that cannot be seen, smell, heard, because that is psychological thing. So what is that? That is psychological or mental fact. For example, say when any question is asked to a person, so उसका जो expression वगैरह होगा which can be seen or feel, that is the physical fact. But what is going on in his mind, what answer he is thinking, that is the mental fact. But what he is speaking, that is not the same, that could not be the same what he is thinking. Something he wants to hide, something he wants to say. So whatever thing he speak, that is the physical fact, because we can hear that. So these two things, these classification done by the Bentham. First one is the physical fact, then the mental fact. You can even infer from the mental fact. So we can infer the things from one's act, but his act is physical fact. But what is in his mind, what we infer from that, that is his mental fact. So whatever the information that is done, it is your mental fact. Or what is thinking someone else, that is his mental fact. So these two classification is done by Bentham. और ये जो फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट है, ये क्लासिफिकेशन और फैक्टा प्रोवेंसिया फैक्टा प्रोवेंडम, दैट क्लासिफिकेशन इज डन बाय, दैट इज गिवन बाय मुनीर जस्टिस. इट इज गिवन बाय मुनीर जस्टिस. सो इसको पीटी में पूछ लिया जाता है. द क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल मेंटल फैक्ट इज गिवन बाय बेंथम एंड फैक्ट इन इशू एंड रिलीवेंट फैक्ट इज गिवन बाय मुनीर जस्टिस. नाउ लेट्स रीड the definition of fact under section 3 of Indian Evidence Act. Fact means and includes anything, state of things or relation of things capable of being perceived by the senses. Fact means and includes. So whenever it is written that includes, किसी भी definition में जब word includes लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो definition एग्जॉस्टिव नहीं है. उसमें और भी बातें, उस डेफिनेशन में और भी बातें उसी तरह की मिलती जुलती सिमिलर काइंड्स थिंग्स ऑफ सिमिलर काइंड आ सकती हैं. जब भी वो लिखते हैं इट इंक्लूड्स, मीन्स दे आर नॉट गिविंग द एग्जॉस्टिव लिस्ट, दे आर मेंशनिंग सर्टेन फैक्ट्स बट मोर फैक्ट्स कैन बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन. सो जब भी वर्ड इंक्लूड का यूज करते हैं, सो दे आर नॉट गिविंग द एग्जॉस्टिव लिस्ट. So fact means and includes anything, state of things
or relation of things capable of being perceived by the senses. So facts means and includes anything, state of things or relation of things capable of being perceived by the senses. So I already told you being perceived by the senses. What are the various sense perception? Eyes, ears, nose, and so forth. Something you have smell, seen, something you touch, and you are having that sensation. So these are what? These all are sense perception. So anything which is observed through your sense perception, that is called physical fact. अब फॉर एग्जांपल से किसी ने आपके ऊपर गर्म पानी डाल दिया, जो गर्म पानी ये गर्म है या ठंडा है देख कर तो पता नहीं पड़ेगा जब तक आप भाप वाप ना देख लें उसमें। अब पानी को आप कैसे पता करोगे वैसे अदरवाइज? भाप तो कई कंडीशनों में अलग कंडीशंस में भी आ सकती है, तो अदरवाइज जब तक टच ना करो तब तक कैसे पता पड़ेगा गर्म है ठंडा है? और गर्म है तो कितना गर्म है? अब हॉट वाटर आपकी बॉडी को टच करता है, दैट इज ऑल्सो परसेप्शन, sense perception. It touches your body skin, so that feeling of your skin, the heat of the water, that is physical fact. So fact means and includes, first one is physical, then fact means and includes any mental condition of which any person is conscious. Ab they are writing any mental condition of which any person is conscious. Why are using the word conscious? अब ये जो मेंटल कॉन्शियसनेस किसके बारे में बात कर रही है? अगर मेरा मेंटल कंडीशन के बारे में बात कर रही है तो इट इज कॉन्शियसनेस ऑफ योर्स और मी। अगर मेरे मेंटल कंडीशन के बारे में बात कर रही है तो ये कॉन्शियसनेस किसके बारे में लिखा गया है? मेरे कॉन्शियसनेस या फिर आपके कॉन्शियसनेस? हियर दे आर टॉकिंग अबाउट हिज ओन कॉन्शियसनेस। इफ दे आर टॉकिंग अबाउट माई मेंटल कंडीशन, then I am myself having that consciousness. In order to be a mental fact, the person who has that mental condition, he should be conscious about that mental condition. Now you see that can be known by the others also, by your conduct, etc. But here what they are talking about is that any person having a particular mental condition, if he is having awareness of that mental condition, मतलब मेरी मेंटल कंडीशन जो है उसके बारे में मुझको अवेयरनेस है, मीन्स व्हाट? दैट मेंटल कंडीशन विल गवर्न योर बिहेवियर, आपके बिहेवियर को गवर्न करेगा वो मेंटल कंडीशन। जो मेंटल कंडीशन आपके सबकॉन्शियस में है वो आपके डे टू डे बिहेवियर को गवर्न नहीं करेगा, बट जो बात आपके कॉन्शियस में है, जो कॉन्शियस माइंड में है, वो आपके डे टू डे बिहेवियर को गवर्न करेगा। एंड दैट इज वेयर देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड्स ऑफ फैक्ट्स। वन इज दैट मेंटल फैक्ट विच इज हिडन इनसाइड यू एंड ऑफ विच यू आर नॉट अवेयर। अब हम किसी कार्य को करते हैं तो पर्टिकुलर मेंटल कंडीशन के साथ किसी एक वर्क को कर रहे हैं हम, तो हमारा पूरा जो मेंटल एफर्ट है, कॉन्शियस है माइंड, कंसाइज ऑफ माइंड हमारी वो पर्टिकुलर वर्क पे लगेगा। तो साइड में जो चीज चल रही होंगी उस पर हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं होगा। तो वो सारी चीज हमारे, ऐसा नहीं है कि हमारे माइंड को पता नहीं रहता, बट दैट विल स्टोर्ड इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड। सो वॉट एवर मेंटल कंडीशन विच इज नोन टू यू, जिसके बारे में आपको पता रहता है, दैट इज द फैक्ट, or the mental fact here we are talking about. Something which is in the subconscious is not concerned with this. Evidence Act is concerned only with the mental condition of which a person is conscious. The person himself is conscious, because Evidence Act is concerned about facts which are visible. So it is your mind, the person's mind, and it is hidden in hidden things, and his mind is not governing his conduct of everything,
but the 4%, the known things he is having, that will govern his conduct in day to day, and that is where the Evidence Act is concerned. अब फॉर एग्जाम्पल से किसी ने चोरी की या फिर कोई क्राइम कर कर आया, उसने पुलिस वाले को देखा, अब ही नोज दैट अगर उसका कोई ऐसा बिहेवियर होगा, उसको पता है कि उसका कुछ ऐसा बिहेवियर होगा जिससे पुलिस वाले उसको पकड़ लें, अगर वो भागेगा उधर से तो उसको he will be targeted whether he has done some wrong or not, या फिर उसका एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन इस तरीके का होगा कि पुलिस वाले उसको देखकर पता कर लें कि दैट ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड इन दैट. So even though he is from inside known that mental condition that he has not to do certain things, but उसकी जो 2 to 4% जो माइंड पोजीशंस है वो फोकस्ड ऑन दैट कि क्योंकि उसने कुछ गलत किया है, ड्यू टू दैट उसके जो एक्ट्स हैं वो उस तरीके से ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, बिकॉज हिज माइंड वॉज मेंटल कंडीशन एट द डूइंग ऑफ दैट वर्क इज कॉन्शियस ऑन दैट वर्क. वो उसकी कॉन्शियसनेस उसके अकॉर्डिंग उसके एक्ट्स हो रहे हैं. सो एक्ट फॉर दैट क्राइम इन्वेस्टिगेशन वगैरह एंड ट्रायल वगैरह में, तो इंडियन एविडेंस एक्ट इज कंसर्न विद दैट मेंटल कंडीशन ऑफ दैट पर्सन. पुलिस को देखकर वो भाग जाता है, उसकी मेंटल कंडीशन है, बिकॉज ही इज कॉन्शियस अबाउट हिज एक्ट. तो उसका उस टाइम और भी सारी चीज हो रही होंगी, बट ही इज more conscious about running because of certain reason. Now facts means and includes anything establish the relation of thing. अब इसका एक एग्जांपल जैसे डीएनए टेस्टिंग है, रिलेशंस ऑफ थिंग्स. किसी सर्टिफिकेट वगैरह में अगर किसी व्यक्ति के बच्चे हैं तो उसके सर्टिफिकेट में उस व्यक्ति का नाम है, स्कूल सर्टिफिकेट में, बर्थ सर्टिफिकेट में, ऑल दैट. So that document is a fact because it is establishing relationship between two persons. Similarly, so and so forth. Now let's see illustrations that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact. अब ये किस फैक्ट का एग्जाम्पल है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल फैक्ट. जैसे कोई रूम है, उसमें टेबल, चेयर, बेड, पिलो, बेड शीट, all that are arranged in a certain order. This is physical fact. Then that a man heard or saw something, that is a fact. So he heard something or saw something, that is physical fact. अगर physical fact की हम definition देखें तो that is anything capable of being perceived by the senses. Anything which is capable of being perceived by the senses. And here we are heard and so. Then that a man holds a certain opinion. अब ओपिनियन इज ए मेंटल फैक्ट, बट उस चीज को अगर मैं कह देता हूँ सेड सर्टेन वर्ड्स, देन इट इज ए फिजिकल फैक्ट. दैट ए मैन होल्ड्स ए सर्टेन ओपिनियन, हैज ए सर्टेन इंटेंशन, एक्ट्स इन गुड फेथ और फ्रॉडुलेंट और यूज ए पर्टिकुलर वर्ड इन ए पर्टिकुलर सेंस. अब तो इनवेंडो मीन्स एक पर्टिकुलर वर्ड कहते कुछ है और उसका सेंस कुछ और रहता है. हिंदी में लोकोक्तियां बोलते हैं, मतलब कहा कुछ और मीनिंग कुछ और. और इज और वाज एट ए स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस ऑफ ए पर्टिकुलर सेंसेशन. ये कौन सा फैक्ट है? दिस इज मेंटल फैक्ट. आई एम हैविंग ए पर्टिकुलर सेंसेशन. सपोज आई एम हैविंग ए फीलिंग ऑफ मेंटल पेन. द फीलिंग ऑफ मेंटल पेन आई हैव, दैट इज ए मेंटल फैक्ट. बट एट द टाइम व्हेन आई एक्सप्रेस दैट, अब मान लो मेरे सिर में दर्द है, दैट इज माई हिडन फीलिंग, दैट इज मेंटल फैक्ट. बट मैं सिर दबाने लग जाऊं अपना, देन इट इज विजिबल टू अदर्स. सो दिस फैक्ट व्हाट आई एम डूइंग इज ए फिजिकल फैक्ट. अब नेक्स्ट, दैट ए मैन हैज ए सर्टेन रेपुटेशन. व्हाट इज दैट? विच फैक्ट? अब यू सी, रेपुटेशन इज ए mental fact, but when the reputation is expressed, then it becomes the physical fact. अब फॉर एग्जाम्पल से मेरे बारे में किसी का अगर कोई रेपुटेशन है किसी के मन में,
या फिर मेरे मन में किसी और का रेपुटेशन है, तो वो तो अंदर है, दैट इज हिडन, देन दैट इज अ मेंटल फैक्ट। बट उस रेपुटेशन को हम किसी और को बताते हैं, डिस्कस करते हैं, दैट इज द फिजिकल फैक्ट। बट प्राइमरली द रेपुटेशन इज ए mental fact. So the mental fact evidence act is concerned with only those mental facts if the person who is having that mental fact is conscious. If something is there in subconscious and he is not aware of that, that would not be considered to be the mental fact for the purpose of Indian Evidence Act. The other classification we have is the fact in issue and the relevant fact. The other classification we had was the fact in issue and relevant fact. Fact in issue are the main facts on the basis of which your rights will be proved or disproved, and the relevant facts are those which together go on to prove or disprove the fact in issue are the relevant facts. And the relevant facts also called the circumstantial evidences. Fact in issue also called facta probandum, and this is called facta probantia. So now we have to discuss the meaning of the fact in issue and thereafter the relevant facts and the concept of relevancy. So first of all we have to see what is the fact. What is a fact? We also saw that fact is a basic thing which is to be proved in a case. In any civil and criminal matter, it is a fact which has to be proved or disproved. But every fact will not be proved. What has to be proved is either fact in issue or the relevant fact. So that is what we have to discuss. Then we would discuss fact in issue, then relevant fact, then the concept of relevancy along with the relevant facts. They are only. Then after completing that we will enter into the concept of admissibility. Then finally the concept of reliability. Now let's see fact in issue. Let see with an example. Start with it an example. Suppose there is a criminal matter and A is an accused and he is an accused of killing B. And the charge frame against A is of section 302 IPC, that is murder of the B. A के ऊपर B के मर्डर का चार्ज लगाया है and we have to decide what is the fact in issue in this case. We have to look what will be the fact in issue in this case. Now you see it is a question of rights and liabilities. If A has committed a murder, then is it not the societal right? It is alleged on the A that he has committed the murder. Then is it not the societal right that he shall be prosecuted and punished? Since it is a criminal matter, so it is the right of the society, and in society the relatives of B also came. But at large it is the right of the society. So it is the right of the society to have A prosecuted, convicted, and punished for whatever wrong the A has committed. So it is the right of the society to prosecute him and punish him. He would be prosecuted and punished. And now for when we talk about the liability, it is liability to undergo the punishment. If he had committed the murder, then it is his liability to undergo the punishment. All those facts which go on to establish the culpability and culpability means punishability. Liability of A. Culpability means that you have committed the wrong, therefore you have to be punished. Plus the extent of liability कि कितना punishment मिलेगा आपको, death sentence मिलेगा या फिर life imprisonment मिलेगा. So all those facts which go on to establish the societal right. So all those facts which go on to establish the societal right to have A prosecuted and punished, and also this liability, culpability, and the extent of liability. All those facts which go on to establish this
will be considered to be the fact in issue. अब इस एग्जाम्पल में क्या फैक्ट इन इशू होगा ये बताना पड़ेगा हमको. So in this, first thing we have to prove is whether A killed B. Then whether A had intention to kill B. So according to the clause, what would be the mens rea? So here we are talking about the intention. Whether A had mens rea, here is intention to kill B. अब इन दोनों के बेसिस पर आप मर्डर प्रूव कर सकते हैं कि ए ने बी को मारा अगर प्रूव हो जाता है और उसकी इंटेंशन थी मारने की तो मर्डर प्रूफ हो जाएगा. वी आर नॉट नीडेड टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी फैक्ट हियर. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दोज फैक्ट्स विच टुगेदर go on to establish that fact whether he has committed the murder, and also the fact which go on to establish the nature and extent of liability. अब culpability तो इन दो बातों से प्रूव हो जाएगी. सेक्शन 300 culpability, that whether he killed B and whether he is having intention to kill B. So by these two things section 300 is proved. Now the question of liability came. अब liability की बात करें तो इसको प्रूव करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि whether the case fall under the rarest of rare case, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कि whether it would be punishable to life imprisonment or death sentence. So for that you have to examine whether the case falls in rarest of rare cases, क्योंकि डेथ सेंटेंस के केस में आपको देखना होगा whether the cases fall under rarest of rare cases. अब ये तो हो गया प्रोसिक्यूशन का वर्क. अब ऐसा तो नहीं है कि ए कोई डिफेंस नहीं लेगा. ए मे ऑल्सो टेक सम डिफेंसेस. फॉर एग्जाम्पल ही टेक द डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस. He may also lead some defenses, and if the private defense is proved, then obviously he will not liable for the offense. Or he may take the defense of any of the exceptions under section 300, grave and sudden provocation exceeding the right of private defense, so and so forth. He may take any of the 5 exceptions of 300 defense. 5 में से किसी का भी डिफेंस ले सकता है. And when he take the defense of any of these exceptions, then even though the murder is proved, but the punishment get reduced if he is able to prove any of those 5 exceptions. Then his liability reduced to culpable homicide not amounting to murder. So in general, we can say that fourth point is any of the exceptions. It can be general exception और इट कैन बी एक्सेप्शन टू सेक्शन 300. अगर इनमें से कोई एक प्रूव हो जाए, अगर जनरल एक्सेप्शन प्रूव हो जाए तो उसकी पूरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, ही वुड बी एक्विटेड. और अगर जनरल एक्सेप्शन प्रूव ना हो तो सेक्शन 300 का अगर कोई एक एक्सेप्शन प्रूव हो जाए देन ही विल बी लायबल, ही वुड बी लायबल ओनली फॉर द कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. So these are the main facts. These are the main facts which go on to establish the societal right to punish the culprit and also go on to establish his duty to undergo the punishment, his culpability, punishability, and then what is the quantum of punishment. So that is the extent and nature of the liability. Terms पे ध्यान दीजिएगा. The right of the society, convicted and punished, the accused, that will be established by these facts. The fact that this person committed the murder, that would be established by these facts, plus the nature and the extent of the punishment is to be given to him is also to be established by these facts. And therefore these are the main facts which are called fact in issue. Now similarly, when we talk about a civil matter, let's take an example of a contract. Suppose A has entered to a contract with the B and B has breached the contract. A file a suit for claiming damages. A का कंटेंशन है कि B के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है और
उसने ब्रीच किया बी ने कॉन्ट्रैक्ट का और ए डैमेजेस अब मांग रहा है, तो उसके लिए ए ने एक सूट फाइल किया अगेंस्ट बी फॉर क्लेमिंग डैमेजेस। अब इधर जब ए फाइल करेगा सूट बी के खिलाफ फॉर डैमेजेस, then here in this case what are the facts which A needs to establish in order to prove his cause of action and avail the damages for himself, or what are the facts which we need to prove in order to avoid the liability. First fact is to prove is whether there was a contract or not. Then number 2, whether there was breach of contract. क्या बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया? क्या बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया? क्योंकि और भी तो पॉइंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी में रेज द कंटेंशन दैट देयर वाज फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और बी में क्लेम दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज वायलेबल एंड आई हैव अवॉइडेड इट, और ही में क्लेम दैट द एग्रीमेंट वाज void. So in that ways, whether there is breach of contract or whether there was valid contract, then what else? अब मान लो अगर प्रूव हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ था, then in that case the quantum of damages to be decided. In that case the quantum of damages has to be examined. अगर प्रूव हो जाए कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ था, अब क्वांटम ऑफ डैमेज को एग्जामिन करने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 73 सेक्शन 73 पढ़ा होगा। अब 73 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रीजनेबल फॉरसाइट ऑफ द बोथ द पार्टीज, सो जब आप क्वांटम ऑफ डैमेजेस की बात करते हो तो वहाँ पर रीजनेबल फॉरसाइट की बात करते हैं रिगार्डिंग द डैमेजेस। वहाँ पर remoteness of damages and other issues will come. So basically that is related to section 73 of the contract act. So those facts go on to determine as what is the quantum of damages to be awarded. So those facts together will go on to determine as what is the quantum of damages which is to be awarded. So we can simply say that facts related to section 73 of Indian Contract Act. अब मान लो उसमें रिलीफ में जो रिलीफ मांगा है इसमें सूट में, उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांगा है, that I want specific performance of the contract. Then there what facts will be going to determine whether the specific performance shall be given or not. तो अगर उसने specific performance भी मांगा है, then the quantum of relief under the specific performance of the contract, और उसके लिए हम देखेंगे facts related to the section 10 of the SRA, that is specific relief act, and also the facts relating to the section 16 clause C of the specific relief act, wherein the readiness and willingness of the part of his contract is to be observed, whether he is ready and willing to perform his part of contract. So these are the facts which are going to establish first whether there was a contract, whether there is a contract, then second whether there was a breach of contract, then whether the plaintiff is entitled to damages or not, and if yes, what is the quantum of damages, and next whether he is entitled to specific performance of the contract, and if yes, then how much of the specific performance will be granted, how much the specific performance shall be granted. So all these facts is called to establish, number one, whether A is having the right to obtain the damages for the specific performance, whether A is having the legal right for the damages and for the specific performance, and as to whether B is liable to pay the damages and to do specific performance. And also not only that, it will also establish the nature and the extent of the liability of B. अब जब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं, नेचर ऑफ, extent of right, extent of liability. So similarly, suppose in this case it is a civil matter. Similarly, in this case, suppose it is a civil matter. In the similar case, suppose A was a minor. Now A is the minor and he filed a suit without the next friend. So in this another issue is that whether A is minor or not, because that will go on to prove whether he is in disability
because if he is a minor then the next friend be ahead in the suit, because minor और unsound अपने आप सूट नहीं कर सकता, next friend के थ्रू ही करेगा. So therefore the issue would be whether A is under disability or B is under disability or not. So in that situation one more fact would be added and that should be determined by the court. So you have understand that या criminal matter हो या civil matter हो, plaintiff हो या society हो या victim हो in criminal matter, उसके legal right plus जो defendant है या accused है उसकी liability, और सिर्फ liability नहीं, nature and extent of liability, और प्लस ये कि उनमें से कोई माइनर या अनसाउंड तो नहीं है, डिसेबल्ड तो नहीं है. ये सारी बातें जिन फैक्ट से एस्टेब्लिश होंगी उन फैक्ट्स को आप कहोगे दैट दे आर द फैक्ट्स इन इशू. नाउ लेट्स सी सेक्शन 3 फैक्ट्स इन इशू. द एक्सप्रेशन फैक्ट्स इन इशू means and includes the expression facts in issue means and includes any fact from which either by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. So they are talking about same thing, right, nature of liability, extent of liability, whether you are disabled or not, all these facts in the suit or criminal proceedings. So whatever facts which go on to establish these things will be considered to be fact in issue. और जबकि रिलेवेंट फैक्ट कुछ और है, जो फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए जो आप लेते हो दैट इज रिलेवेंट फैक्ट. फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए मोटिव, कंडक्ट, ये सब प्रूव करोगे, दे विल बी रिलेवेंट फैक्ट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेवेंट फैक्ट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन फैक्ट्स, द प्राइमरी फैक्ट्स और द प्रिंसिपल फैक्ट्स, द फैक्टा प्रोबेंडम which are establishing the rights and liabilities. For example, whenever a civil suit is filed by A against B, in that suit A will certainly have a cause of action, and in order to prove that cause of action A has to establish certain facts, and in order to disprove certain facts B has to prove certain facts. In order to disprove cause of action of A, in order to disprove cause of action B has to establish certain facts. तो ये जो facts हैं जो या तो A cause of action को prove करने के लिए प्रस्तुत करे या फिर B cause of action, A के cause of action को disprove करने के लिए प्रस्तुत करे, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पर B की liability और nature और extent of liability और A का right और nature और extent of right establish होगा. तो वो जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स जो कॉज ऑफ एक्शन के प्रूव या डिसप्रूव के लिए एस्टेब्लिश होंगे, यूज होंगे, जो कॉज ऑफ एक्शन के प्रूव या डिसप्रूव के लिए यूज होंगे, प्लस जो रिलीफ के क्वांटम और एक्सटेंट के लिए प्रूव होंगे, दे विल बी कॉल्ड द फैक्ट इन इशू. एंड एनी अदर फैक्ट विच गो ऑन टू prove or disprove that fact in issue will be called a relevant fact. Let's see the definition again. The expression facts in issue means and includes. Again, the meaning of includes means what? The using of word includes means the definition is not exhaustive. More things can fall under the definition. The expression fact in issue means and includes any fact from which either by itself or in connection with some other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right, with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right. You see, with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right means cause of action का existence, cause of action का non-existence, फिर आपका कॉज ऑफ एक्शन का नेचर, देन कॉज ऑफ एक्शन का एक्सटेंट. उसी तरीके से लाइबिलिटी, नेचर ऑफ लाइबिलिटी, अब किसकी लाइबिलिटी, इस एग्जांपल में बी की लाइबिलिटी, द नेचर ऑफ बीज लाइबिलिटी,
nature of B's liability, the existence of B's liability, the non-existence of B's liability. So in that way you break कर करके पढ़ोगे ना. So A के जो rights हैं उनका nature, उनका existence, उनका non-existent, उनका extent, और B की जो liability है उनका nature, उनका extent, उनका existence, non-existence, या फिर उनमें से कोई disabled है कि नहीं. All these things are to be proved by certain facts, and those facts will go on to prove or disprove these. All those facts which go on to prove or disprove these, they will be called fact in issue. Then they are also saying asserted or denied in any suit or proceeding. A suit is a civil matter. A proceedings, it can be criminal matter or it can be civil also. For example, execution in CPC is not a suit, it is a proceeding. CRPC में 125 is not a pure criminal proceeding, it is a quasi criminal proceeding. तो ये सूट लिख रहे हैं सिविल सूट्स के लिए, लेकिन सिविल में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को आप सूट नहीं बोलते हो. इट विल कॉल्ड सिविल प्रोसीडिंग्स ओनली. इट विल बी कॉल्ड प्रोसीडिंग्स ओनली. ऑल्सो द proceedings of section 120 CRPC is not a pure criminal, that is a quasi criminal. Just to apply to a broader extent, they are using the word suit or proceeding. अब उसके पहले क्या लिख रहे हैं, asserted or denied. What do you mean by asserted or denied? A will be asserting his legal right and B is denying the rights of A. Means one party asserts something and another party denying it. In the criminal matter, the prosecution asserts that the accused has committed the offense and the defense denied. So that is assertion or denied. Like in this example, A asserts his rights and here B denies his rights. And here A not only asserts his rights, A also asserts the liabilities of B. And not only the liabilities of B, also the extent and nature of the liabilities of B. A अपना right assert करता है, अपना cause of action assert करता है, और A B की liability को assert करता है that you are liable for this. A B की liability का nature और extent भी assert करता है that you must pay this much of damages to me. You must perform the contract specifically. So that is what the assertion of rights for himself, assertion of the liability of B, plus the assertion of nature and extent of the liabilities of A. And when he does that, then B denies that. B denies the right of A. B denies that B is liable. अपनी liability को B deny करेगा. B denies the nature and extent of the liability. A तो assert करेगा अपने nature and extent of rights और B deny करेगा nature and extent of liability, क्योंकि एक का right होगा दूसरे की liability होगी. So ये जो assertion और denial किसी civil suit या criminal matter में होता है, the assertion of one party and denial by the other, this is to be established by certain facts. Whatever you asserting or denying, that is to be established by certain facts. And those facts which go on to establish these rights, etc., they will be called the facts in issue. अब illustration देखते हैं. A is accused of the murder of B. At his trial, the following facts may be in issue: that A caused B's death, A intend to cause B's death, that A had received grave and sudden provocation from B. तो ये हम देख चुके हैं एग्जाम्पल में. ये third one is the general exception. This came into the exception. Then that A at the time of doing the act which caused B's death was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing its nature. So they are taking, this is an example of criminal. So ये हम देख चुके हैं whether the accused caused the death, whether accused has the intention to cause death, then whether the accused fall under any exception,
lack unsoundness of mind, or in acting in the private defense. So these facts will establish whether A is guilty of murder and what is the extent and nature of the liability. Prosecution is in this asserting that he is guilty of murder, and defense is denying that he is guilty of murder. डिफेंस मना करेगा कि ये गिल्टी नहीं है मर्डर का. सो असर्शन एंड डिनाइल ये फैक्ट्स हैं जो इस चीज को प्रूव करेंगे केस को. सो दैट इज फैक्ट्स इन इशू. नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. Whenever under the provisions of the law for the time being in force relating to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue. Why they are writing this here is because in the CPC they are not using the word fact in issue, and the Evidence Act says that in order to prove your case, you have to prove your facts in issue or the relevant facts. So Evidence Act सिविल प्रोसीड्योर पे भी लगता है और क्रिमिनल प्रोसीड्योर पे भी लगता है, और एविडेंस एक्ट यूज कर रहे हैं टर्म फैक्ट इन इशू. लेकिन इन सीपीसी दे आर नॉट यूजिंग द टर्म फैक्ट इन इशू, दे आर यूजिंग द वर्ड इशू ऑफ फैक्ट. इशू ऑफ फैक्ट. In CPC they are using the word issues of fact. So they are just clarifying by the explanation that even if the CPC using the word issue of fact, it is the one and the same thing, fact in issue, and whatever answer to that fact in issue is to be given, that fact to be established, whatever answer to that issue of fact is given, जो इशू ऑफ फैक्ट का क्वेश्चन है उसको उसका जो भी आंसर दिया जाएगा टू प्रूव टू एस्टेब्लिश दैट फैक्ट इज कॉल्ड द फैक्ट इन इशू. अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. सपोज देयर इज केस इज बिटवीन ए एंड बी. अगेन दिस इज सूट अ बिट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ए असर्ट्स दैट देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट. ए का जो प्लीडिंग है प्लेंट में, ए असर्ट्स दैट देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इन रिप्लाई B asserts that there was no contract. B asserts that there was no contract, or we can say that B denies the contract. He said that the defendant denies the pleadings of para 1 of the plaintiff. तो अगर आप CPC पढ़ोगे तो उसमें अगर एक पार्टी असर्ट करता है कोई फैक्ट और अपोजिट पार्टी डिनाई करता है तो उस पर कोर्ट इशू सेटल करेगी, इशू फ्रेम करेगी कोर्ट. फॉर एग्जांपल हियर ए इज असर्टिंग दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड बी वाज डिनाइंग दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ए इज असर्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड बी डिनाइंग द कॉन्ट्रैक्ट. सो हियर द कोर्ट विल सेटल अ इशू, फ्रेम अ इशू, एंड हियर द इशू विल बी whether there was a contract between the plaintiff and defendant, and the burden of proof lies upon whom? Initially upon the plaintiff, that is OPP, onus of proof upon the plaintiff. अभी हमको इतने सब से मतलब नहीं है. So whether there was a contract, then as per CPC under order 14, अब इसमें ए ने कहा कि there was a contract. ए का जो सेंटेंस होगा वो होगा that the plaintiff entered into a contract with the defendant for the so and so amount of consideration with respect to such and such property. अब सपोज वो डॉक्यूमेंटेड है तो एज पर द डॉक्यूमेंट अनेक्स्ड एंड इट इज अनेक्सर इतना, तो डॉक्यूमेंट का अनेक्सर लगाया कि डॉक्यूमेंट अनेक्स कर दिया है. अब उसमें डिफेंडेंट का जवाब आएगा दैट द डिफेंडेंट डिनाइज द प्लीडिंग्स ऑफ द पैरा नंबर 1 of plaint. So what did he say? That there is no contract. So if there is an assertion by one party and there is denial by another party, then there will be a settlement of issue on that point. The court will frame issue on that point, and the issue was framed like this: whether there was contract, where there was said contract between the said parties, between A and B, where there was the said contract between the plaintiff and defendant, and the burden of proof lie here on the plaintiff. अब ये तो हो गया आपका इशू ऑफ फैक्ट.
अब इसमें फैक्ट इन इशू क्या होगा? अब इसके लिए एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ लेते हैं। Whenever under the provisions of the law for the time being in force relating to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue. Whenever under the provisions of the CPC, any court records an issue of fact. अब यहाँ पर कोर्ट ने इशू ऑफ फैक्ट इसके एग्जाम्पल में इशू ऑफ फैक्ट रिकॉर्ड किया। What was the issue of fact? Whether there was a contract between the A and B. The fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue. अब ये तो एक क्वेश्चन है जो हुआ था हमारा फ्रेम सेटल, whether there is a contract, that is a interrogative sentence. अब इस क्वेश्चन के लिए कौन सा फैक्ट एस्टेब्लिश करोगे? वेदर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए एक पार्टी जो बोलेगी दैट देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट और एक पार्टी बोलेगी दैट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। सो अदरवाइज एक फैक्ट एस्टेब्लिश करेंगे। सो है बात एक ही, इशू ऑफ फैक्ट का मतलब है वो क्वेश्चन के फॉर्म में होगा वेदर देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट, और उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इन ऑर्डर टू आंसर दैट क्वेश्चन whatever fact you need to prove or disprove, जो भी फैक्ट लगेगा उसको उस क्वेश्चन को प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए, दैट फैक्ट विल बी फैक्ट इन इशू। सो इस क्वेश्चन का फैक्ट इन इशू क्या होगा? वेदर देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट। इसका होगा दैट देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कह सकते हो, या फिर ऐसे कह सकते हो दैट देयर वाज ए नो कॉन्ट्रैक्ट, देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। When the defendant proves, then he will say that there was no contract, and when the plaintiff proves, then he will say that there was a contract. तो उसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर असर्टिव सेंटेंस बना दो, उसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट कर दो, that will become the fact in issue. So write down, the CPC does not use the word fact in issue, inverted commas में। The CPC does not use the word fact in issue. Rather, as per Order 14, the court settles the issue of facts. Settle the issue of facts. And therefore, in the Evidence Act, a clarification was required in that regard. Whenever issue of fact are settled in civil suit under CPC, it is in the form of an interrogative sentence. The fact to be asserted or denied in order to answer that interrogative sentence will be called fact in issue. The fact to be asserted or denied in order to answer that interrogative sentence will be called the fact in issue. For example, if the issue of fact is inverted commas में whether there was a contract question mark inverted comma close, then the fact in issue here will be that there was a contract or that there was no contract. तो जो CPC आप अगर पढ़ोगे या फिर जिन्होंने पढ़ रखा है, तो इधर जो CPC में जो क्वेश्चन फॉर्म में फ्रेम होगा इशू, हमेशा जो फ्रेमिंग ऑफ इशू CPC में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में होगा। अब सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज ए पर्सन हु committed a nuisance against me. So in this example, the plaintiff would asserting that by defendant committed the nuisance against the plaintiff by doing so and so act. Then the defendant will reply that the defendant denies the pleadings of the para number 1, means I am not committed any kind of nuisance. तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? Whether the defendant has committed any kind of nuisance, whether the defendant has committed the act of nuisance against the plaintiff question mark. अब ये तो हो गया इशू ऑफ फैक्ट। अब इसके आंसर में कौन सा फैक्ट प्रूव होगा या डिसप्रूव होगा? अब इसके आंसर में अगर प्लेंटिफ की तरफ से देखो तो वो बोलेगा दैट देयर वाज ए न्यूसेंस कमिटेड,
और अपोजिट पार्टी की तरफ से, डिफेंडेंट की तरफ से देखो तो वो लिखेगा दैट देयर वाज नो न्यूसेंस कमिटेड। सो दिस कंटेंट्स आर इन असर्टिव सेंटेंस आर फैक्ट इन इशू। ये जो सेंटेंसेस हैं ये असर्टिव सेंटेंस हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड फैक्ट इन इशू। वेदर देयर वाज एन न्यूसेंस कमिटेड, ये क्वेश्चन फॉर्म में है, दैट इज इशू ऑफ फैक्ट। अब उसके आंसर में प्लेंटिफ के प्रोस्पेक्टिव से दैट देयर वाज ए न्यूसेंस कमिटेड, और डिफेंडेंट के प्रोस्पेक्टिव से दैट देयर वाज नो न्यूसेंस कमिटेड। So you look at either ways. Both of them will be called the fact in issue. अब देखो यहाँ पर इशू क्या फ्रेम होगा, whether there was a contract, ये इशू फ्रेम हुआ as per the CPC. It is called issue of fact. अब उसका fact in issue क्या होगा? Simply speaking, in answer to this question, whatever fact has to be proved or disproved will be called a fact in issue. In answer to the question, whatever fact is proved or disproved is fact in issue. The question क्या, whether there was a contract. The answer is what? On behalf of plaintiff, and plaintiff will say yes, there was a contract, and on the other hand, the defendant will say no, there is no contract. Defendant will say there is no contract. So either of these will be the fact in issue. Either of these. Assertive sentence will be what? Was what? That there is a contract. That is a fact in issue. That there was no contract. That is a fact in issue. So that's it for this topic, fact in issue. In the next lecture, we will continue with the relevancy, definition of relevancy and relevant fact. Thank you for watching the lecture.